Yes. Hi sir. Hello. I was reading today's Indian Express और इसके जो फर्स्ट पेज पे there is this news about dancing girl. I'm sure आपने पढ़ा होगा. हाँ, मैंने आज सुबह देखी खबर वो. So क्या आपका क्या कहना है सर इसके बारे में? What is happening? It's little absurd. What they have done is they have published a new NCERT book Yeah. of 9th standard. एक आर्ट एंड कल्चर किताब है मधुरिमा नाम से. In that, in the very first chapter, there is a photo of dancing girl of Hadappa, the very famous bronze sculpture. Yeah. Last year UPSC ने सवाल पूछा ही था उसके ऊपर. बिल्कुल बिल्कुल. तो वो न्यूड है, तो उन्होंने उसको पूरा रीटच करके उसका जो सेंट्रल पार्ट ऑफ हर बॉडी है उसको हाइड कर दिया. Yes, मतलब look at this. I was very surprised when I read this in the morning. So I was under assumption कि कुछ ये कॉन्शियस डिसीजन होगा एंड मे बी इट इज बिकॉज ऑफ न्यूडिटी एंड 9th स्टैंडर्ड के बच्चे. बट व्हेन आई वेंट थ्रू दैट चैप्टर आई वाज वेरी क्यूरियस कि देखें यहाँ पे कॉन्टेक्स्ट क्या है. हिस्टोरियंस ऑलवेज वर्क विद सम कॉन्टेक्स्ट. तो इन द वेरी सेम चैप्टर आई सॉ कि उसमें 4 और फोटो हैं. Okay. And they are also very sensuous and very explicit. For example, the one photo of a dancing position in Chidambaram temple. यहाँ पे आप देखो चिदम्बरम टेम्पल चोल एम्पायर एरा का 9th सेंचुरी का वो स्कल्पचर है. इट्स वेरी एक्सप्लिसिट. देन यू गो थोड़ा नीचे जाओ तो देयर इज अदर स्कल्पचर फ्रॉम राजस्थान, a place called Harshgiri in Sikar. Again the 10th century. It is also very sexually explicit. A dancer. You go थोड़ा सा और नीचे on next page you have a very famous sculpture of a Madanika of Hoysala era. That is also very sensuous. Right. And then you go one page down, आपको और मिलेगा in Angkor Wat, not only in India but also outside India. यहाँ पे अप्सरा आए हैं. Those are also very explicit. तो I don't understand the logic कि एक ही किताब में एक ही चैप्टर में you have 4 photos which are semi explicit, वो चल जाते हैं, एक फोटो नहीं चलता. It makes no sense. In this news item on page 2, they have referred to it. कि it is perhaps possibly because of nudity. और ये जो attitude of Indian towards nudity जो है, it is widely shaped by something called as Victorian morality. So in Queen Victoria's era, जब राज था अंग्रेजों का, they were quite modest. They were उसमें शर्म लज्जा की बात ज़्यादा होती थी. मिडिल क्लास की औरतों ने कैसा दिखना चाहिए, कैसे कपड़े पहनने चाहिए, ये वैल्यू सिस्टम अंग्रेजों की है. Now this NCERT is shaped upon national education policy. उसका पूरा एजेंडा है explicit decolonization. And if you want to decolonize things, then we should also decolonize very central aspect of sexuality, Victorian morality. और यहाँ तो उसी इमेज को वो ढक रहे हैं. So I don't understand what is happening. This is also so uneven. I think only you pointed it out. मेरे को तो अभी ये पढ़ के मेरा perception was different, but when I'm hearing you, it seems completely different to me. I hope they They listen. they rectify it. Right. Thank you, sir. So, thank you.